Pakistan's institutions seem to be in free fall. Politicization and polarization are plaguing our political class, judiciary, and security establishment, and few will survive the mudslinging unsullied. One institution, however, could emerge stronger from the ensuing chaos if it chose to do so. Pakistan's mainstream media faces an opportunity to reconsolidate. A decade and some ago, mainstream media itself was part of the institutional tussles underway at the time, exploiting unprecedented freedoms and sky-high ratings to emerge as a political player and kingmaker in its own right. Overreach led to the sector being cut down to size either through censorship, overregulation, and economic strangulation, or intimidation and co-option. Numerous campaigns led by the security, political and judicial establishment pitted the press as anti-state, and discredited even the most credible reportage as fake news, or worse, an act of treason. The public now places little stock in mainstream news offerings, with assumptions that all journalism is Lifafa journalism. But Pakistan's elite institutions are now turning the tactics they once deployed against the press against each other. Never has the bell tolled for Pakistani democracy as loudly as it does right now. There are clear signs that in this mess, the media is needed more than ever. The media is needed more than ever. The recent, unacceptable, crackdown on the PTI's social media wing is a reminder that the information ecosystem has shifted from the airwaves to the digital realm. Pakistan, like the West before it, is facing the problem of social media echo chambers, in which algorithms drive political polarization, and misinformation circulates without check. Narratives that begin as TikTok videos or deep fakes online quickly substitute for reality. If social media is allowed to thrive in the absence of the sense check that traditional journalism provides, we will be awash in propaganda and conspiracy theories. The result, further fragmentation, more polarization, complete democratic erosion. Separately, recent revelations about the Dawn leaks episode demonstrate the enduring value of sound journalism. Although an accurate, verified news story was wielded as a way to unduly empower a military officer and undermine a civilian government, it has stood the test of the time, and circled back to reveal the failings of our elite institutions. It is an unprecedented case study that reminds us that one-time taboos will one day be acknowledged as truths. As inter- and interinstitutional power plays intensify, it will be critical for Pakistan's limping democratic setup to have recourse to facts. Therein lies the opportunity for our mainstream media. Emerging as a sane actor that can explain and document the actions of other institutions will help the media rebuild public trust. Old-fashioned journalism may yet be the only way to navigate through the institutional impasse and polarization, and give democracy a shot at survival. But this will only work if the media meaningfully sees an opportunity for rehabilitation. The first step will be for the sector to act as a unified front, refusing to fall victim to the partisanship that has robbed its credibility so far. Impartiality will be a key outcome of this unity, requiring all outlets to push back against content bans or other attempts to silence one party or another, and, where necessary, finding creative ways to provide balanced coverage. Several other ingredients are necessary for the media to rebuild trust. Transparency is essential. News outlets will have to be clear about how they obtained news and any shortcomings in their process. Clear labeling of content as either news, opinion, or sponsored content is essential. And unrelenting fact-checking, including clear processes for identifying and discounting disinformation, will also be necessary, ideally with harmonized standards agreed across the industry. Diversity is also key, both in the sense of diverse newsmakers and diversity of content. These should be measured across all aspects: political, ethno-linguistic, religious, and socio-economic. It is only by having newsrooms and news content that reflect the concerns of all constituents and communities that the media emerges as a trusted player. This approach will minimize the focus on elite power tussles, putting the petty shenanigans currently underway in the broader perspective of a country in crisis that urgently requires leadership, better economic management, and a vision for a sustainable future.
Democracy supporters wondering how to tackle the present crisis should consider establishing well-governed grant programs to support journalism. And the media should change tack to better charter these tumultuous political waters, showing itself deserving of such public trust. The writer is a political and integrity risk analyst. Published in Dawn, April 3, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के इदारे आज़ादाना ज़वाल का शिकार हैं। सियासत और पोलराइजेशन हमारे सियासी तबके, अदलिया और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को परेशान कर रही है और बहुत कम लोग कीचड़ उछालने से बच पाएंगे। ताहम, अगर एक इदारा ऐसा करने का इंतखाब करता है तो वो आने वाली अफरा-तफरी से ज़्यादा मजबूत हैकर उभर सकता है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को दोबारा मुत्तहिद होने का मौका मिल रहा है। एक दहाई और कुछ अरसा पहले मेन स्ट्रीम मीडिया खुद इस वक्त जारी इदारा जाती कशमकश का हिस्सा था, जिसमें बेमिसाल आज़ादियों और बुलंद दर्जाबंदी का फ़ायदा उठाते हुए एक सियासी खिलाड़ी और किंगमेकर के तौर पर उभरा था। हद से ज़्यादा रसाई के नतीजे में इस शोबे को साइज तक कम कर दिया गया, आतो सेंसरशिप, ओवर रेगुलेशन और माशी गला घोंटने, डराने धमकाने और ताउन के जरिए। सिक्योरिटी, सियासी और अदालती एस्टेब्लिशमेंट की क़ियादत में मुतअद्दिद मुहिम्मात ने प्रेस को रियासत मुखालिफ के तौर पर पेश किया और यहाँ तक कि इंतहाई काबिल एतमाद रिपोर्टिंग को भी जाली खबर, इससे भी बदतर, गद्दारी के अमल के तौर पर बदनाम किया। अवाम अब मरकजी धारे की खबरों की पेशकशों में बहुत कम हिस्सा रखते हैं। इस मफरूज़े के साथ के तमाम सहाफ़त लाफाफा सहाफ़त है। लेकिन पाकिस्तान के अशराफिया के इदारे अब वो हथकंडे अपना रहे हैं जो वो कभी प्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए इतनी ज़ोर शोर से घंटी कभी नहीं बजी जितनी इस वक्त बज रही है। इस बात के वाज़े इशारे मिल रहे हैं कि इस गड़बड़ में मीडिया की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। मीडिया की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। पीटीआई के सोशल मीडिया विंग पर हालिया नाकाबिल कबूल क्रेकडाउन इस बात की याद दिलाता है कि इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम एयरवेव्स से डिजिटल दायरे में मुंतकिल हो चुका है। मगरिब की तरह पाकिस्तान को भी सोशल मीडिया इको चैम्बर्स के मसले का सामना है, जिसमें एल्गोरिथम सियासी पोलराइजेशन को चलाते हैं और गलत मालूमात बगैर किसी रोक टोक के गर्दिश करती है। टुक टाक वीडियोज़ और डीप फैक्ट्स के तौर पर शुरू होने वाली कहानियां जल्द ही हकीकत की जगह ले लेती हैं। अगर रिवायती सहाफ़त की अदम मौजूदगी में सोशल मीडिया को फलने फूलने दिया जाए तो हम प्रोपेगंडे और साजिशी नज़रियात में डूब जाएंगे। नतीजा, मज़ीद तकसीम, ज़्यादा पोलराइजेशन, मुकम्मल जमहूरी ज़वाल। इसके अलावा डॉन लेक्स के हवाले से हालिया इंकिशाफ़ात से भी अच्छी सहाफ़त की पायदार अहमियत का पता चलता है। अगरचे एक दुरुस्त और मुसद्दिक़ा खबर को एक फ़ौजी अफसर को गैर ज़रूरी तौर पर बाइख्तियार बनाने और सिविलियन हुकूमत को कमज़ोर करने के तरीक़े के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यह वक्त की आजमाइश पर पूरा उतरी है और हमारे अशराफिया के इदारों की नाकामियों को ज़ाहिर करने के लिए पीछे मुड़ गई है। ये एक बेमिसाल केस स्टडी है जो हमें याद दिलाती है कि एक बार की ममानतों को एक दिन सच्चाई के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। जैसे जैसे बैन अल इदारा जाती और बैन अल इदारा जाती ताकत के खेल ओहे में शिद्दत आती जा रही है, पाकिस्तान के कमज़ोर जमहूरी ढांचे के लिए हक़ाइक़ का सहारा लेना बहुत अहम होगा। इसी में हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए मौका है। एक समझदार अदाकार के तौर पर उभरना जो दूसरे इदारों के इक़दामात की वज़ाहत और दस्तावेज़ छूटिया शक्ल दे सकता है। मीडिया को अवामी एतमाद की बहाली में मदद मिलेगी। इदारा जाती तातुल और पोलराइजेशन से निकलने और जमहूरियत को जिंदा रखने का वाहिद रास्ता पुराने ज़माने की सहाफ़त हो सकती है, लेकिन यह तभी काम करेगा जब मीडिया बामानी तौर पर बहाली का मौका देखेगा। पहला कदम यह होगा कि यह शोबा एक मुत्तहिदा महाज के तौर पर काम करे और इस जानिबदारी का शिकार होने से इनकार करे जिसने अब तक इसकी साख छीन ली है। गैर जानिबदारी इस इतिहाद का एक अहम नतीजा होगी, जिसके तहत तमाम इदारों को मवाद पर पाबंदी या किसी एक फरीक या दूसरे को खामोश करने की दीगर कोशिशों के खिलाफ पीछे हटना होगा और जहां ज़रूरी हो मुतवाज़िन कवरेज फराहम करने के तख्लीकी तरीक़े तलाश करना होंगे। एतमाद की बहाली के लिए मीडिया के लिए कई दीगर अज्जा ज़रूरी हैं।
शफाफियत ज़रूरी है। न्यूज़ आउटलेट्स को इस बारे में वाज़ेह होना होगा कि उन्होंने खबरें कैसे हासिल की और उनके अमल में कोई कोताही। मवाद को खबरों, राय स्पॉन्सर्ड मवाद के तौर पर वाज़ेह लेबल लगाना ज़रूरी है और गलत मालूमात की निशानदेही और रियायत के लिए वाज़ेह तरीक़ाकार समेत हक़ाइक़ की जांच पड़ताल भी ज़रूरी होगी। मिसाली तौर पर सनत भर में मुत्तफ़िक़ा मेआरात के साथ। मुतनव्वे न्यूज़ मेकर्स और मवाद के तनव्वुर दोनों के मानी में तनव्वुर भी कलीदी है। इनकी पैमाइश तमाम पहलुओं में की जानी चाहिए, सियासी, नस्ली, लिसानी, मजहबी और समाजी इक्तिसादी। सिर्फ न्यूज़ रूम्स और खबरों के मवाद से ही मीडिया एक काबिल एतमाद खिलाड़ी के तौर पर उभरता है जो तमाम हलकों और बरादरियों के खदशात की अक्कासी करता है। ये नुक्ता नज़र अशराफिया की ताकत की कशमकश पर तवज्जो को कम से कम करेगा, जिससे बहरान में घिरे मुल्क के वसीतर तनाजुर में इस वक्त जारी छोटी छोटी चीज़ों को सामने लाया जाएगा, जिसके लिए फौरी तौर पर क़ियादत, बेहतर माशी इंतज़ाम और पायदार मुस्तक़बिल के विजन की ज़रूरत है। मौजूदा बहरान से निमटने के बारे में सोचने वाले जमहूरियत के हामियों को सहाफ़त की हिमायत के लिए अच्छी तरह से मुनज़्ज़म ग्रांट प्रोग्राम कायम करने पर गौर करना चाहिए और मीडिया को उन हंगामा खेज़ सियासी पानियों को बेहतर तरीके से पेश करने के लिए अपना मौक़िफ़ तब्दील करना चाहिए और ख़ुद को इस तरह के अवामी एतमाद का मुस्तहिक़ ज़ाहिर करना चाहिए। मज़मून निगार एक सियासी और दियानतदारी के ख़तरे के तज्ज़ियाकार हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 3 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.